the first thing I remember she told me was कि ये बात किसी को नहीं बोलना and ये नहीं, ये कैसे हो गया, and she started crying and she was very scared. ये क्या है, ये पता नहीं कौन सी बीमारी है. तो आई वॉज इन शॉक जब मुझे हुआ पहली बार. I suddenly started observing कि जो मेरा weight है वो ज़्यादा gain हो रहा है. Obviously I thought it was because of the sedentary lifestyle, क्योंकि उन दिनों there were no colleges and I could not go out. So for the first couple of months I thought it is due to the lockdown. How it started was like my period stopped for 3 months. Continuously मुझे 3 months नहीं हो रहे थे periods. It is a polycystic ovarian disease. It is a genetic disorder which manifests itself with various symptoms at puberty. It affects the life of a patient. It leads to obesity, it leads to acne and hirsutism and psychological disturbances and also various menstrual disturbances. When I would see myself in the mirror, you know, मेरा weight gain, it was clearly evident, and obviously इसने मुझे काफ़ी हद तक disturb किया. Body image issues जो थे वो appear होना शुरू हो गए. I could clearly see मेरे face पे excessive hair, and even if I bleached it, it was clearly evident कि I had extra hair on my face. So I tried to manage it cosmetically, but still वो चीज़ थी that if I don't manage it, obviously it will come back again. So it may be from mild, it may be moderate, and in the severest form, the women they gain a lot of weight, and it leads to then other symptoms like diabetes, hypertension. It's a metabolic syndrome. Full-fledged metabolic syndrome is revealed. I started skipping periods for months together, and उसके बाद I told my mother and we went for an ultrasound. और जो results थे that was, एक तो I was cystic, और उसके अलावा my ovarian volume had also increased. Some patients will have very mild symptoms like they may have irregular menstruation. That may be the only symptom. When at young age, means unmarried women will complain of irregular period. Think of PCOD, unless proved otherwise. Or else tell her to keep the menstrual calendar. Up to 35 days, no problem. Even 40 days, sometimes the menstrual cycle can last. But like 2 months, 3 months, there is a cause. मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो वहाँ पे मुझे पता चला आई एम डायग्नोज्ड विद PCOD. By ultrasound, you see the cysts, and it's a multicystic ovary, about 10 to 20 cysts, which are peripherally arranged like a necklace, and stroma has echogenic appearance on ultrasound. That is PCOD. मुझे लगता है PCOD के डायग्नोज होने से ज़्यादा जो मेरे को सुनना पड़ा, हर एक से कि तुम्हें हुआ क्या है, ये मत खाओ, वो मत करो, ऐसे क्यों हो रहा है, तुम्हें ही क्यों हो रहा है, तुम ही टेंशन लेती हो. बिकॉज ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, बट बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी एंग्शियस काइंड ऑफ पर्सन, तो सो दे ब्लेम्ड इट ऑन माई एंजाइटी बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी अवेयरनेस कि ये चीज़ क्यों होती है, क्या होती है, तो दे ब्लेम्ड इट ऑन माई एंजाइटी. माएँ कंप्लेन करती हैं कि ये जी एजिटेटेड होती है, बहुत उनके मूड स्विंग्स बहुत होती हैं. So it's not a girl who is doing it deliberately, or she's not a disobedient girl जो बात मान नहीं रही है. It is her hormones that are playing a trick with her. तो हमने बड़े compassionately इन बच्चों के साथ बिहेव करना है, क्योंकि उनको अपने सेल्फ एस्टीम भी बहुत कम होती है. उनके चेहरे पे जो पिंपल्स होते हैं, जो हेयर ग्रोथ होती है, या जो ओबेसिटी आ जाती है, उससे उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ख़राब, मतलब दे गेट रियली लो सेल्फ एस्टीम. I think is my mother, she had strictly forbidden me not to tell anyone about it, because she was like, लोगों में यही होता है, फिर कल को रिश्ते नहीं आएंगे. Even I have not even told a single friend about me getting diagnosed with PCOD. So they come really in a very, very disturbed state. Mama के husband ने वरना उसको खानदार बनो, and she will not have children and all.
So we have to realize that infertility is a condition in itself, and there are many causes of infertility, and PCOD is one of the causes of infertility, और बहुत छोटी कम percentage. If you see infertility in a broader sense as a condition, तो PCOD contributes into a very small percentage of such patients. My family, they were very scared, और my mother especially, उन्होंने चीज़ें अज्यूम करना स्टार्ट की, ओ अब आगे जाके ऐसा होगा, अब आगे जाके वैसा होगा, तो ऑब्वियसली वो माइंडसेट मेरे अंदर भी आ गया, बिकॉज आई लिव विद दोज पीपल. My family was so worried about me कि ये क्या हो गया. Like I'm the only daughter of my family. तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा, कि ये क्या हो गया. और मैरिज की बात तो इसमें आती है ऑब्वियसली, कि मैरिज में क्या होगा. We have seen a lot of PCOD girls who have very successfully have their married life, had their children, but yes, it needs a commitment to yourself. Like in this age, we usually neglect our health, but these girls can't ignore. They have to have a pattern. They have to have a discipline, which is for everybody, which is for me and you. But then these girls can't really take it easy. मैंने वॉक करना शुरू किया, मैंने अपना डाइट जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया. देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग सम चेंजेस. ऑल्दो मेरा जो फेशियल ग्रोथ है वो कम नहीं हुआ, बट या जो इरेगुलरिटी थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई. They have to be taking good care of their nutrition. There are some foods that are very, very, I say they are almost poisonous for PCOD girls. जैसे जंक फूड है, स्पेशली दिस पैक्ड प्रोसेस्ड फूड जो है, फ्रोजन फूड जो, उनको बिल्कुल बंद करने, सोडा बिल्कुल बंद करना है. दे हैव टू लिमिट देयर शुगर्स, कट डाउन ऑन देयर शुगर्स. So PCOD is not the end of life. It is very common, 30 to 40%, which shows that the population we will have patients of PCOD off and on. It is a genetic disorder. Never expect that they will be treated. You can keep it under control by your good compliance. What can you do for such girls? तो लड़कियों से वहाँ अवेयरनेस स्टार्ट करनी है, स्कूल लेवल पे अवेयरनेस स्टार्ट करनी है, ठीक है, कॉलेज लेवल्स पे अवेयरनेस स्टार्ट करनी है. And I don't want to scare my patients, but they have to be told that there are long-term complications so that they can take care of themselves. They have to take care of themselves. Family, जैसे मैंने बोला, family को हमने अवेयर करना है. They have to come to the doctor along with the child. Maybe with their father, maybe with their brothers, sisters, everybody. The family has to be counseled कि इस बच्चे के साथ, इस लड़की के साथ तुम किस तरह से behave करोगे. You know, she is undergoing lot of stress. She has very low self-esteem. How do we support her? Do we always body shame her? Do we always say negative things to her? है ना. तो वहाँ पे हमको फिर फैमिली को अवेयर करना, और फैमिली के बाद we have to the boys need to be aware that it's not a disease where the girl will not be able to bear children. She is as normal as any other girl. आपका एक माइंडसेट इसकी तरफ पॉजिटिव होना चाहिए. आई थिंक फैमिलीज नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इट डज नॉट मेक यू अनटचेबल. ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट एन इम्बैलेंस विच कैन बी ईजिली ट्रीटेड, और इसमें फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए. ऑब्वियसली एक लड़की जो इसके थ्रू, जो इससे डील कर रही है, शी विल हैव मूड स्विंग्स, she will get easily irritated, and at that time the support from family and friends is very important. तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें अपनी सोसाइटी में कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है एंड इट कैन बी इजीली ट्रीटेड, दैट्स इट. जैसे कोई फ्लू या फीवर है उस तरह इसको ट्रीट करना चाहिए, रादर देन कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड. वैसा कुछ भी नहीं है.